हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर सौरव सर क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं आईएसआई एम मैथ 2024 सब्जेक्टिव पेपर का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन वन सॉल्व हो गया था पिछले वीडियो में। अब इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर टू का सॉल्यूशन। तो हमारा कोचिंग में एडमिशन के लिए अगर कोई आपको पीवाईक्यू लगेगा, मॉक टेस्ट लगेगा, डाउट क्लियरिंग क्लासेस चाहिए तो आप डायरेक्टली कॉल करिए और व्हाट्सएप करिए इस नंबर पे 9836793076। सौरभ सर आपको खुद रिप्लाई देंगे। और हम लोग दूसरा कोचिंग की तरह नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन करके ही स्टूडेंट लोगों को आंसर भेजा जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस वाला क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या बताया गया है, लेट V बी अ फाइनाइट डायमेंशनल रियल वेक्टर स्पेस T define V to V and linear map which is diagonalizable. Let lambda be an eigenvalue of T and W, kernel of lambda T minus lambda I, where I define V to V the identity map. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है, सो दैट देयर एग्जिस्ट सपोज U of V such that U intersection W equals to 0 and V equals to U plus W. Define U belongs to U and W belongs to W. तो क्वेश्चन नंबर ए को हम कैसे सॉल्व करिए देख लीजिए। We can define, given the finite dimensional real vector space, क्वेश्चन नंबर ए, हाँ ये वेक्टर स्पेस V and a linear map T define V tends to V, which is diagonalizable and we will address the problem we will address this problem in two parts. So what is in part A? Here part A, since T is diagonalizable, so V has a basics of consisting eigenvalues of T. Since T is diagonalizable, and V has a basis consisting of eigenvectors. Let's check it. Okay, eigenvectors of T. That means the space W is eigenspace to the corresponding to the eigenvalue lambda. Space of W corresponding to the eigenspace, the lambda. To construct U, you can use the fact that the space V can be decomposed into a direct sum. Using V can be decomposed using a direct sum of eigenspaces. Okay, so
First one we prove this solution in part 1. Let lambda 1, lambda 2, lambda I, lambda k be the distinct eigenvalues of k, be the distinct eigenvalues of t, and let vi be the eigenspace corresponding to lambda I, where lambda I equals, where lambda equals to lambda 1. And part question point 2, since T is diagonalizable, so V equals to direct sum I equals to 1 to k Vi. That means we can define, the third point is define W equals to V1. So we need to find a subspace of U, subspace of U such that U intersection W equals to nullity 0 and V equals to U plus W. And the next part is point number 4. यहाँ पर एक सबस्पेस कंसिडर करते हैं जो है U. U is the subspace. U का मतलब डायरेक्ट सम I equals to 2 to k Vi by construction the eigenspaces the eigenspaces of Vi pairwise disjoint. इसका मतलब क्या है? Their intersection is nullity 0 and V equals to V1 direct sum V2 direct sum dot 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 up to Vk. That means W direct sum U. And point number 5 is therefore U intersection W nullity 0 and every element small v belongs to capital B can be uniquely written as V equals to U plus W with U belongs to caps U and W belongs to caps W. And
In part B, how to solve part B? Recall the T and S commute. First point, recall the T and S commute. So St equals to Ts. Consider an eigenvector W belongs to caps W corresponding to the eigenvalue lambda. That means I dot E dot W belongs to kernel of T minus lambda I. So T minus lambda I into W equals to 0. And the next point is apply A's to the above equation. A's of T minus lambda I into W equals to T minus lambda into W equals to 0. So putting the value in this equation, so S of 0 equals to 0. And the third point is using the commutativity of S and T, using the commutativity of S and T, we have T minus lambda I into S of W equals to S of T minus lambda I into W. That means S of 0 means 0. And the fourth one is hence S of W satisfies the equation T minus lambda I into S of W equals to implying, क्या imply करते हैं? S of W belongs to kernel of T minus lambda I equals to W. Therefore, S of W is a subset of U. Sorry, is a subset of W. And the fifth point is for the subspace U, recall that U equals to direct sum I equals to 2 to K. Since the T is diagonalizable, so its commutates T. So the subspace, so यहाँ पर क्या है? T is diagonalizable and S commute करता है T के साथ. So हम बोल ही सकते हैं the subspace T है diagonalizable and S commutes with T. So हम यहाँ पर बोल ही सकते हैं the subspace U under
U is the invariant under U is invariant इसके अंडर A के अंडर. Okay, and the sixth point is let small u belongs to capital U, where since U is the direct sum of eigenspaces to the corresponding the eigenvalues from defined from lambda, so U can be written as क्योंकि हम क्या लिख सकते हैं क्योंकि डिफरेंट फ्रॉम लैम्डा है ये ठीक है डायरेक्ट सम है तो यू को हम लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ eigenvectors corresponding to this eigen's value corresponding to this eigen values. And the seventh point is each eigenvector each eigenvector small v belongs to capital V. So for I not equals to 1 satisfies V belongs to lambda IV applying S using the commutativity we have P of S of V, that means S of TV equals to S of lambda I of V, sorry, S of lambda I into V, that means lambda I into S of V. So, number 8 point में क्या बोल रहा है? Here, SV is an eigenvector of T. ये T का एक eigenvector of T with eigenvalue lambda I, that meaning is V belongs to Vi, therefore is of U is a subset of U. So thus we have shown that S of W belong a subset of W and S of U is a subset of U. तो ऐसे ही बहुत सारे प्रूफ को फॉलो कर देखने के लिए आप फॉलो करिए डॉक्टर सौरभ सर क्लासेस और जुड़े रहिए हमारे साथ और क्वेश्चन में कुछ डाउट वगैरह लगे तो डायरेक्ट इस नंबर पे कांटेक्ट करिए और एडमिशन के लिए भी इस नंबर पे कांटेक्ट करिए. चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थर्ड नंबर क्वेश्चन के साथ. थैंक यू. आज के लिए इतना ही बच्चों.